Assalamualaikum. This is Iqra Saeed Ahmed from the Castle, and today we are going to solve page number 30. And on Monday, I will take your coursework of page number 30 to 33. So kindly let us know that children are doing their work or not, because the cooperation is really very important for us. So send us the pictures of your kid homework or coursework, etc. Okay. Now let's come to our today's topic. Fill in the blanks. The place value of 8 is the place value of 8 in 348,561 is, look at ones, tens, 100,000, 10,000 and 100,000. So place value 8 के नीचे देखें 8 किस प्लेस वैल्यू के नीचे आ रहा है 1000 इसको सेपरेटली प्रोनाउंस करें 1000 8000. So the place value of 8 in 348,561 is 8,000. Got it? 8,000. Now B, 31, 43 and 25 are dash numbers. मैंने आपको बताया था कि जिन डिजिट्स के लास्ट पे 1 3 7 5 आ जाए 1 3 5 7 आ जाए वो क्या होते हैं ऑड नंबर. अब इन वैल्यूज़ के देखें लास्ट डिजिट इज़ ऑन वन साइड 1. लास्ट डिजिट सेकेंड वैल्यू में देखें लास्ट डिजिट क्या है 3 ऑन वन साइड. थर्ड वन last digit on one's side is 5. These are odd numbers. Got it? Now C, 52 is dash then 53. Okay, mention ones tens on the both value ones tens. Okay, now compare 5. अब फर्स्ट डिजिट क्या है टेंथ साइड पे 5, वहाँ भी फर्स्ट डिजिट क्या है 5, neglected. Move to the next digit which is 1 ones. अब यहाँ पे ones के नीचे क्या है 2. सेकेंड वैल्यू में ones के नीचे क्या है 3. It means both digits are different, so we will compare these digits. So 2 is less than 3 or 2 is greater than 3? Very good. 2 is less than 3. Now to the D, 21, 22, 23, 24 and 25 are in dash order. किस ऑर्डर में है मैंने आपको बताया था ना कि ascending order from smallest value to greatest value, and descending order from we will move from greater to smaller. तो यहाँ पे देखें 21, 22, 23, 23, 24 and 25. It's mean we move from smallest value to the greatest value. Okay, so it's a ascending order. Got it? Ascending order. Now E, 11 is dash then 10. Again on mention ones tens on both value. Okay, on tens side there is 1 and here on tens side is 1, so both digits are same, so leave it. Move to the next digit ones. यहाँ पे ones side में 1 है और यहाँ पे ones side ones में 0 है. It's mean both digits are different, that's why we will compare it. So 1 is greater than 0 or 1 is less than 0. 1 is greater than 0, so that's why we put greater sign here. Now question 2 state whether the following are true or false. Now in 495 the place value of 9 is 10. Look at this, ones tens 100, तो tens के नीचे क्या है 9, so the place value of 9 is tens, so the statement is true. Got it? Now Roman numerals 5 stand for 4. Roman numeral जैसे ये V लिखा हुआ stands for 4. No, it's false.
because it stands for 5. Now see, 73 is an even number. I already told you कि अगर 1 3 5 7 9 आ जाए तो वो कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर होते हैं. तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है इवन नंबर, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ 84 इज एन इवन नंबर. यस, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिन डिजिट्स के लास्ट ऑन वन साइड पे 2 4 6 8 और 0 आ जाए तो वो कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर. देखें यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है वन साइड पे, ऑन वन साइड देयर इज 4, सो दैट्स व्हाई इट्स एन इवन नंबर, सो स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ 15 is greater than 14. How to compare it? First mentioned ones tens on the both value. Now look at tens side of both value. On this there is 1 and 14 there is also 1, so both digits are same. Leave it, move to the next. On one side there is 5 and on second value on one side there is 4. Values are different, so that's why we can compare it. So 5 is greater than 4 or 5 is less than 4. 5 is greater than 4, its mean statement is true. Now question 3, select the correct answer from the given options. Roman numerals. X we stand for, look at this, X stand for 10 and VI stand for 6. So 10 plus 6 equals to 16. So 10, 14 and 16. So and 15. तो हमने सर्कल किस में करना है? हमने फिल किस में करना है? 16 में. Now 400,340 figures in. अब इनको फिगर्स में बताना है. फर्स्ट 400,000. 400 कितने होते हैं? 400. नेक्स्ट 340. 340 मीन्स 340. तो यहाँ पे वो कौन सा नंबर है? 400 देन 340. Yes, third one. Now the number 19 is greater than 18, double of 9, less than 18 and double of 10. अब greater than 18, is it okay, double of 10. Double of 10 means 10 plus 10 equals to 20. So the number 20, no. Double of 9, 9 plus 9 equals to 18. Answer is 18, no. Less than 18, 9 is less than 18, no. Greater than 18, yes. So our answer is greater than 18. Now the place value of 22 in 21,750 is 2,000, no. 200,000, no. मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1000 और 10,000 को हम एक साथ प्रोनाउंस करते हैं. इट्स मीन 21,000 हैं ये. सो 20,000 और 2,000. तो इनके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? 20. सो 20,000 इज आवर आंसर. 1000. Now 17 in Roman numeral is 17. 10 plus 7. Look at this. यहाँ पे मैंने सॉल्व किया. 10 plus 5 ये तो 15 बनता है. 10 plus 7 equals to 17. 7 and ये तो wrong है. ये इस तरह से तो लिखा ही नहीं जाता numeral number. So second one is correct. Got it? So Allah Hafiz.